Everyone. Firstly, I would like to introduce myself that I'm Dr. Rima Aslam from Infection Control Department and working as a research associate. It's my immense pleasure to welcome you all for this virtual graduation ceremony. Before we get started this ceremony, I would like to call Mr. Shehbaz Ahmad Khan for the Holy Quran Tilawat. Please, Mr. Shehbaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. As we know, infection prevention and control affects all aspects of healthcare services, including hand hygiene, surgical site infections and injection safety, and microbial resistance, nationally as well as globally. Effective infection control practices reduces needs of antibiotics and also prevents spreads of infection. I welcome all the speakers and guests from different walks of life to share their vast experiences and knowledges. Now, I would like to call Ma'am Arfa Khatoon. She is the Senior Manager of IC Department and running this program since 2017. She is the most creative person I've ever met. Round of applause, Ma'am Arfa Khatoon. Assalamu alaikum, and thank you Rima for invite me. मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं और स्पेशली मैं डॉक्टर शामुल अशरफ और डॉक्टर अल्ताफ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम लेकर हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और आज हमारे लिए बहुत एक खुशी का मुकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5वां बैच है जिसकी हम क्लोजिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं और अभी थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगी कि हम लोगों ने अब तक क्या अचीव किया। उससे पहले मैं काफ़ी लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस कोर्स के लिए और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जिस तरह से इंडस हॉस्पिटल ने हमें फैसिलिटेट किया है मैं इंडस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी मैं इस कोर्स के हवाले से कि ये कोर्स का अब तक क्या रहा है और आगे हम इसको कहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो सबको पता है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ये एक APIC का एक इसके हवाले से एक कोट था, मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे किया, तो हम इसको देखते हैं कि एवरी डे द वर्ल्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशनिस्ट फाइट टू कीप आवर कम्युनिटीज सेफ फ्रॉम इन्फेक्शंस थ्रेट, अ ग्लोबल पैंडेमिक, healthcare associated infections, measles outbreak,
flu season, and so many others. Therefore, we need to learn the skills to combat with infection. तो ज़रूरत है कि हम इसके अंदर जितना अपने आप को एक्सपर्ट्स कर सकें, उतना ही हम अच्छे तरीके से इन्फेक्शन के साथ फाइट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने पूरा एक साल पढ़ा, आपको आइडिया हुआ कि क्या क्या चीज़ें हमें क्या करना चाहिए। जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो मुझे कभी कभी फील आ रहा होता है कि जितना कुछ है इन्फेक्शन कंट्रोल में वो शायद एक साल में भी कवर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द पावर। हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क में, उसके 3 विंग्स हैं। हम लोग 3 डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, जो कि कराची कैंपस के अंदर है, जिसको हम कोरंगी कैंपस कहते हैं। इसके साथ ही शेख सईद हॉस्पिटल है और PIB हॉस्पिटल है, जहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसके अलावा हम लोग नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, माशाल्लाह मोर देन 14 हॉस्पिटल्स हमारे टर्शियरी केयर और प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स जो इंडस जिसको रन कर रहा है, उसको भी इन्फेक्शन कंट्रोल मेन कैंपस से ही देखा जा रहा है वहाँ पे। और उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं या सर्विलेंस हैं, ऑडिट हैं, उसको भी यहीं से मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा जो हमने एक बहुत ही अहम चीज थी जो हमने ली, दैट इज एजुकेशन। और एजुकेशन में बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं। लाइक हम लोग 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम करा रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल डिप्लोमा है, जो 1 ईयर का है, जिसमें थ्योरी और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग शामिल है। इसके अलावा ऑन बोर्ड स्टाफ के लिए हमारे बहुत फ्रिक्वेंटली सेशंस चल रहे होते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, ताकि हम वो तमाम प्रैक्टिसेस कर सकें जिससे हम अपने पेशेंट्स की लाइफ को बचा सकें, हम अपनी कॉस्ट को बचा सकें, और हम आने वाले टाइम के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि फ्यूचर जो है वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का है। फ्यूचर इज इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इसके बगैर हम शायद नहीं चल पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक गैप है पाकिस्तान के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल की एजुकेशन के हवाले से, जिसको हमें फुल करना है। और इंडस हॉस्पिटल इसके अंदर बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बहुत ज़रूरत है कि बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपनी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और इसके हवाले से आगे आएं। और गवर्नमेंट लेवल से भी इसकी ज़रूरत है कि इसकी बाकायदा पाकिस्तान के अंदर कोई डिग्री प्रोग्राम हो, ताकि एक अच्छा प्रोग्राम जो है इन्फेक्शन कंट्रोल का वो रन हो सके, ना सिर्फ एजुकेशन में बल्कि फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी कुछ इस तरह के काम आने चाहिए, जहाँ पे हर हॉस्पिटल इसका पाबंद हो कि जहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सके। तो अब तक क्या हमारी अचीवमेंट्स रही हैं? 2017 में हमने स्टार्ट किया था, 2022 आ गया है और अब 2023 बिल्कुल दीवार के उस तरफ खड़ा है। तो स्टार्ट हमने बहुत ही छोटे से उससे किया था, जिसमें नो डाउट डॉक्टर अल्ताफ का बहुत हमारे साथ सपोर्ट रहा, और डॉक्टर शामुल अशरफ जो आज हमारे साथ भी हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे पास बहुत सपोर्ट रही है। उनकी गाइडेंस और उनकी इस तरह की सपोर्ट से हमने स्टार्ट लिया। और इनिशियली हम लोग 22 स्टूडेंट से स्टार्ट हुए, और अब जो पास आउट बैच है वो 147 स्टूडेंट्स का है। और अपकमिंग जो अभी हमारा बैच रन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 160 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड हैं। तो सफ़र तो अच्छा जा रहा है, लेकिन शायद हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो आटे में नमक के बराबर है। तो इसमें हमें और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो स्टेटस है हमारे बैच, जो पिछले बैचेस गुजरे हैं उनका, अब तक हम बैच 1 से लेके बैच 5 तक 385 लोगों को ग्रेजुएट कर सके हैं, और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरनेशनली भी थे जो पास आउट हुए, और उसमें से वो लोग भी अपने उस डिग्री को यूज़ कर रहे हैं। और ये भी एक हमारे लिए
शुक्र का बाइस है कि हमारे स्टूडेंट्स का जो डिप्लोमा है वो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया गया और बहुत सारे लोगों को इसकी बेस पे इंटरनेशनली जॉब्स मिली हैं। तो हमने लोगों ने थोड़ा सा डाटा कलेक्ट किया था, प्लस माइनस हमारे 15 to 20% ग्रेजुएट लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात पे भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे बाकी ग्रेजुएट हैं वो चाहे डायरेक्टली इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन वो किसी ना किसी जगह से अपनी इस नॉलेज को जरूर यूज कर रहे होंगे और उसका बेनिफिट हॉस्पिटल को इन कॉस्ट वाइज और उसकी जो अच्छी रेपो होती है उस पर पड़ रहा होगा और पेशेंट की लाइफ में भी पड़ रहा होगा और हेल्थ केयर वर्कर की अपनी सेफ्टी भी जरूर आ रही होगी। ठीक है जी, तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने टीचर्स, अपनी फैकल्टी जिनके बगैर हम ये कोर्स रन नहीं कर सकते थे। बड़ा अच्छा एक शायर ने शेर कहा कि देखा ना कोह कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। तो हमारी वो फैकल्टी जो हमारे साथ शामिल रही है, मैं उनका थैंक्स कहना चाहती हूँ। हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेस की जो फैकल्टी है उन्होंने बहुत ही हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। हमारी जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है। हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रही है। इसके अलावा जब हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते थे तो हमारा फूड सर्विस डिपार्टमेंट, हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हमारी जो फ्लोर्स पे जो हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो, उन तमाम लोगों ने, इवन फार्मेसी डिपार्टमेंट भी और लेबोरेटरी, इन सब लोगों ने हमारे साथ पूरा सपोर्ट किया है। तो हम इन सब का भी थैंक्स कहते हैं कि इसके बगैर हम ये सक्सेस हासिल नहीं कर सकते थे। तो ये टीम वर्क है और टीम वर्क के बगैर हम नहीं कर सकते थे। इसके अलावा हैंड्स ऑन के लिए हम लोग लाहौर कैंपस को यूज करते रहे हैं। मनावा कैंपस भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देता रहा है और करशी जुबली हॉस्पिटल जो हमारा करशी हॉस्पिटल है इसकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन रही है। तो इनका भी थैंक्स कि इन लोगों की सपोर्ट की वजह से हम एक सक्सेसफुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवा सके हैं कराची में भी और लाहौर में भी। ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है, इनकी तो कंट्रीब्यूशन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। फरहान कोऑर्डिनेटर, आप लोग जानते हैं इनको, ये इस कोर्स की जान है। बाकी सब लोगों की सपोर्ट और इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। ये लोग सब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में भी शामिल रहे हैं और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस रही हैं उसके अंदर भी इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू इन्फेक्शन कंट्रोल टीम फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और रीमा हमारे पास रिसर्च एसोसिएट हैं, ये आप लोगों के वो सारे पेपर्स को देखती रही हैं क्योंकि ये एपिडेमियोलॉजिस्ट भी हैं और रिसर्च में भी इनकी अच्छी ग्रिप है। और इसके अलावा ये खुद बीडीएस हैं तो मेडिकल के से भी इनका लिंक है। तो जितने भी पेपर हमारे पास आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जमा करवाए हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से रीमा ने देखा और आप लोगों को गाइड किया। तो थैंक यू रीमा फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ये हमारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के दौरान ली गई तस्वीर हैं, कुछ कराची की हैं, कुछ लाहौर करशी हॉस्पिटल की हैं। तो ये करंट बैच की पिक्चर्स हैं। सो थैंक यू, ये हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट दिस कोर्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Ma'am Arfa, for such an amazing session. Now, I would like to invite Dr. Shambul Ashraf. He is an Executive Director, Medical Services of Indus Hospital and Health Network. He is the one who helped us to initiate this program due to his great support. And with all these efforts, we successfully running this course. I would like to call Dr. Shambul Ashraf. Please, Dr. Shambul. Thank you very much for inviting me to attend this closing ceremony of infection control course. I don't need to emphasize the importance of infection control in healthcare. We all know how important is infection control in this era of healthcare, where we are
facing the challenges of multi-drug resistance infections, and particularly infection associated in the healthcare settings, hospital-acquired infection. So we are making an effort to not only improve the infection control practices in our hospital and health network, but to create an impact on a national level by teaching and training people around the country. And I am glad to hear that there are people from other part of the world as well. So we are on a learning curve. We started with a modest beginning, and I'm very delighted to see that the number of the participants are increasing in every course. What we need to actually focus is also to assess the impact of what we are creating through this training, number one, and number two, to actually validate our course as well, and to have some audit from external audit on the effectiveness and the impactfulness of our course. It will be very important, and what I would suggest, Arfa, you should also publish your experience of doing this course and what you have achieved so far, what are the challenges you are facing and what impact you have. But I must congratulate the whole infection control team for initiating and carrying on this course. Well done, and congratulations, and also congratulate to all the participants who have passed this course and successfully completed this course. And my advice for all the participants and all the successful candidate would be to actually implement at your place. You should be gaining knowledge is one thing, and implementing knowledge is into practices is another thing. So I think it is very important that you implement whatever you have learned, and to make a difference, in the care of the patient, in the lives of the patient, in the lives of the healthcare professionals. So this is very important. So I don't need to emphasize the what are the areas which infection control covers, but it is extremely important. And we are proud to announce that we have actually infection control as a service line now, and we have an infection control chair in our network now. And Dr. Samreen, mashallah, has qualified in infection control to be chair of infection control in Indus Health and the network. So congratulations, Samreen. Congratulations, Arpa. Carry on the good work, and we are all with you. Whatever support you need from the academic, from directorate, from the admin and medical directorate, we are all with you for this noble cause. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Shambul. I really appreciate it. Now, I would like to call Dr. Altaf Ahmad for the keynote. He's from here, like from Lahore, and he's from PKLI, and his contribution regarding infection control is remarkable and outstanding. His renowned personality. Please welcome Dr. Altaf Ahmad. Assalamualaikum Arfa, and Assalamualaikum everyone. Dr. Shamwell, Assalamualaikum. It's always so good to be with all of you at Indus. से ही मेरी शुरुआत हुई थी, and I'm so happy कि मैं यहाँ पे जो IPC को छोड़ के गया था, आरफा ने उससे कहीं ज़्यादा उसको आगे बढ़ा दिया. So congratulations all the students. मुझे ये बताएं आप, can you see my slides? Arfa, Yes, can you... yes, we can see your slide. Okay,
So congratulations everyone for passing this diploma. It's a good day for all of us. और ज़ाहिर है जितनी खुशी स्टूडेंट को होती है उससे ज़्यादा खुशी टीचर्स को होती है. So congratulations all the teachers and all the mentors and all the support you have at Indus Hospital. इतना बड़ा support मैंने कहीं भी नहीं देखा अभी तक जो Indus Hospital करता है IPC के लिए. So you are fortunate people कि आप Indus के साथ मुंसलिक हो. So थोड़ी सी बात करूँगा कि ये स्लाइड ज़ाहिर है ये अमेरिका की है, यहाँ की नहीं है, but you can multiply it by 10 times. कि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट पास होके निकल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रिव्यू कि ये यूएस में 5% चांस ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होता है यूएस में, यहाँ पे many टाइम्स मोर. सो आप लोगों को कितना काम करना है and how much effort you need to put. Millions and millions of people are affected. Mortality, अमेरिका में mortality almost near to 1 लाख बंदा साल का mortality because of healthcare associated infections. And the amount of money, and think about a hospital based on donations, वहाँ पे आईपीसी का स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज वो तो पहले ही पैसे नहीं ले रहे, दूसरे तो XYZ जहाँ से मिलता है पैसे उठाना शुरू कर देते हैं. लेकिन ये डोनर बेस्ड हॉस्पिटल के लिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए कितना ज़रूरी है कि वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को कम करें. एक ज़माने में मैं कहता था कि इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज कॉस्ट इफेक्टिव, और डॉक्टर शैमिल ने ही ये बात की थी कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. सो ये बात बार बार साबित हो चुकी है कि अगर हमें इस पे काम करना है तो हम इंसान की ज़िंदगी, ज़ाहिर है उसकी कोई कीमत नहीं है, प्लस और बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं, और ये हर हॉस्पिटल में हो सकता है. CRE जो एक वबा फैल चुकी है, इट्स एन एपिडेमिक, इज मोर नोटोरियस देन कोविड. मैं कहूँगा एक साइलेंट पेंडेमिक, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई मीडिया में शोर नहीं है, एटलीस्ट हमारे मुल्कों में. बाहर मुल्कों में तो है. आम तौर पे ये देखा गया है, यू कैन लुक एट फिगर 1 के वहाँ से एक किसी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे सारे पेशेंट उनको इन्फेक्टेड थे, हेल्थ केयर वर्कर ने अपने हाथ नहीं धोए या कॉन्सेप्ट उसको नहीं था, उसने उस बेचारे मरीज को भी CRE लगा दिया. लोग फिर वो दोबारा किसी हॉस्पिटल में गया, वहाँ किसी को भी नहीं था लेकिन इसको था, और अगेन हेल्थ केयर वर्कर की नेग्लिजेंस से उन तमाम मरीजों में फैल गया. सो ये चेन, एक विशेष सर्कल, क्योंकि हमारे अस्पतालों में हम ये नहीं कह सकते कि प्लीज यू आर इन्फेक्टेड विद CRE, डोंट कम टू माय हॉस्पिटल. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आप जो तालीम दे रहे हैं ये इन तमाम अस्पतालों के लिए इतना ज़रूरी है, बिकॉज अगर मुझे अपने हॉस्पिटल को सेव करना है तो मुझे सबको सेव करना है. तो ये लोग जो पढ़ के जा रहे हैं, दे हैव दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी to implement this as quickly as possible and as planned, properly plan it and then implement it. उसके लिए आई एम श्योर आरफा है और आरफा की टीम और मेरी टीम, हम सब तैयार रहते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए. मीडिया, बाहर का मीडिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेन एक बिग चैलेंज. BBC हो, फाइनेंशियल टाइम्स हो, they are just doing everything to tell people कि ये ठीक नहीं है, drugs are not working. Guardian ho, economist ho, I mean the world leaders, the news media is shouting on this. हमारा मीडिया कुछ और कर रहा है, but anyway this is what we have to learn कि अब एंटीबायोटिक हमें नहीं बचा सकती. पाकिस्तानी 120 अरब की एंटीबायोटिक खा चुके हैं एक साल. दिस इज एन अंडर एस्टिमेट. जाहिर है बहुत सारे डाटा तो इनके पास होता नहीं. So think about the amount of wastage is happening all over Pakistan. Misuse हो रहा है, abuse हो रहा है, overuse हो रहा है, and we are looking at a great pandemic, much more than powerful than COVID in coming years, because we are looking at microbes in our labs, the way they are behaving. और इस वक्त सबसे बड़ा मसला अस्पतालों में
अब ये हो चुका है कि आईपीसी एक नहीं है या कम है या एफर्ट नहीं है और पेशेंट आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस. लुकिंग फॉर न्यू एंटीबायोटिक्स नॉट अवेलेबल राइट नाउ एंड नॉट अफोर्डेबल. अभी जो नई एक एंटीबायोटिक आई है 20,000 रुपए पर डे. हाउ कैन यू अफोर्ड 20,000 रुपीज पर डे एंटीबायोटिक? सो एक ये बहुत बड़ा मसला है कि आप इन चक्करों में ना रहें कि एंटीबायोटिक आने वाली है. इमर्जिंग डिजीजेस की लाइन लगी हुई है. कोविड वाज एन एग्जांपल. मंकी पॉक्स अभी तक चल रहा है, हल्का है बट चल रहा है. इबोला इज ऑन दी कि वो नजर आ रहा है कि और भी इस तरह की चीजें सॉरी हो सकती हैं. सो उसको कैसे करेंगे अगर आप प्रिपेयर्डनेस ना हो, आपके पास इन्फेक्शन प्रिवेंशन ना हो. हेल्थ केयर विदाउट आईपीसी, विदाउट एंटीबायोटिक स्टोरशिप एंड डायग्नोस्टिक स्टोरशिप नहीं पॉसिबल है. हेल्थ केयर अब नहीं चल सकता, अदरवाइज पेशेंट का भी नुकसान है, अस्पताल का भी नुकसान है. सो जो लीडरशिप है वो थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूँगा कि आप यू आर गोइंग टू बी लीडर्स इन योर इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि आप जा रहे हैं यहाँ से पढ़कर. रिमेंबर कि ये जो डिप्लोमा आपने किया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग. ये जो लर्निंग है आपकी अब शुरू होगी, क्योंकि अब आप जो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया था एंड उसमें क्या क्या चेंजेस आ गई. सो एज ए लीडर यू हैव टू बिल्ड इट, टीच इट, चेक इट, सेल इट एंड लिव इट. ये आपका एम होना चाहिए कि आपने सबसे पहले बिल्ड इन सिस्टम चेंज. अगर आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, और मैं अपने आप से भी कहता हूँ, मैं आरफा से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, एवरी ईयर सिट डाउन टुगेदर विद योर मैनेजमेंट और थिंक अबाउट कि आपने जो सिस्टम चेंज था, इज इट ट्रू फॉर 2023 ऑल्सो और नॉट. उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिस्टम चेंज सही नहीं किया, then you are not going to teach properly, you are not going to check it properly, you are not going to sell it and live it. So leader, आप लोग leader बनने जा रहे हैं. Leader means you have to implement all this in your hospitals. So उस वक्त इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा यहाँ से जाने के बाद. So leadership जाते ही कुछ लोग गलतियां करते हैं. I can remember one of the first ICN in Indus Hospital. She was not a nurse, she was a microbiologist, but commanding, it should never be commanding. Do what I tell you. This is the most worst kind of leadership you can think of as an infection prevention control person. So you should be visionary, affiliative, democratic, and you have to try all these activity, but do not do as I do now or do what I tell you. ये चीज, ये कल्चर को खत्म कर दे. इसके बगैर चलने की कोशिश करें और अपने इलाकों में जाके इसको इम्प्लीमेंट करें. फोर्सफुली, जबरदस्ती, डांट डपट, ये चीज फिलहाल ठीक नहीं है. इट कभी कभी जरूरत पड़ती है, बट नॉट ऑलवेज. तो मेजॉरिटी में नहीं जरूरत पड़ती. एक और चीज याद रखें, जब आप एज ए लीडर जाएंगे, अपने इलाकों में जाएंगे, अपने हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, यार मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा था, नथिंग इज हैपनिंग. बट रिमेंबर थी, एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था, एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस, मटीरियोलॉजिस्ट था. वो कहता था कहीं पे हल्की सी हवा चलती है ना, तो बाद में वो तूफान बन जाती. So this is known as the theory of butterfly effect, and hand hygiene is butterfly effect. एक छोटा सा काम भी आप करवा लो, अगर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू सेंस करवा लें अपने इदारे में, स्टार्ट विथ इंक्रीजिंग द कंप्लायंस ऑफ हैंड हाइजीन, you will see miracles, you will see a lot of things happening with the butterfly effect. So छोटी चीज करना कोई बुरी बात नहीं. ये नहीं कि पहले ही कह जी हमें नेगेटिव प्रेशर रूम चाहिए और हमें HVAC चाहिए और हमें सीलिंग ऐसी चाहिए. फॉरगेट अबाउट दैट. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट इजी. बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत पैसा लगता है इसमें. इससे तो शुरू करें ना. तो रिमेंबर दी बटरफ्लाई इफेक्ट. मेरा ड्रीम ये है, although I always think I'm part of Indus, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, but Indus Institute of Infection Prevention बनना चाहिए. मेरी दरख्वास्त होगी डॉक्टर शैम्बल से. इसकी बहुत बड़ी नीड है. इसके बहुत सारे एरियाज हैं.
एजुकेशन तो है ही, एंड नाउ द डिप्लोमा के बाद मास्टर्स भी होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजी पे भी कोर्सेज होने चाहिए, स्पेशलाइज कोर्सेज होने चाहिए आईपीसी से रिलेटेड। अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, सर्वेलेंस और ऑडिट की सर्विसेज नहीं है, रिसर्च नहीं है। वी एज ए टीम इंडस शुड ट्राई टू कंट्रोल एपिडेमिक्स जो पब्लिक हेल्थ को मिला के अपने साथ दूसरे अस्पतालों और इंस्टीट्यूट को, बिकॉज इंडस का एम, डॉक्टर बारी का एम ये है कि सबको लेके चला जाए और गाइडलाइंस बनाए। गाइडलाइंस, लोकल गाइडलाइंस की बड़ी कमी है। सो ऑल दिस कैन हैपन व्हेन इंडस विल हैव एन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन। और जो टीम आपके साथ है, जो आपके साथ जो पीछे आपको सपोर्टिंग हैंड्स है, वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। सो आई विश कि ऐसा जल्द से जल्द हो। So thank you very much, Arfa, and thank you, Dr. Shamil, and all. Once again, congratulations, everyone. Allah Hafiz. Over to you, Arfa. Thank you so much, Dr. Altaf. It's a great information from your side. Thank you so much once again. Now I would like to call from the students' feedback from our students about this program. So firstly, I would call Saida Rabia Naz. Rabia, can you hear me? I can hear you. Yeah, Assalamu please alaikum share and your good feedback. morning. Yeah, for sure. I'm very interesting and I'm very happy to share the feedback of this program. First of all, I just would like to say Assalamu alaikum to the soul of this institute, like Ma'am Arfa Khatun and the most accountable person, Sir Farhan Zafar, that you have provided us a very special background and special platform for this infection control diploma, and all credit goes to the Indus Hospital. We are very lucky that we have been the part of the Indus Hospital from the last 3 to 4 years. And the most important thing, now we are became the graduated, we are having the diploma of this infection control. We are now accountable and responsible. We have a lot of now responsibility on our shoulders. First of all, congratulations to all participants of this program. Here, I just would like to share the objective about the CDC, what they have, like whatever the teachers are provided us in this program. Now we are having the time to put our efforts. Now we have the time to show our interest. Now we have the time to show our education about the infection control. Is to develop environment infection control guidelines and renew the reframe strategies of our terms and conditions. Actually, the whole program was overview. It was very good, and what can I say? It's all, we are very lucky that we are chosen for this. Although we are nurses, I'm a nurse. I have graduated from the Indus Hospital, which was affiliated from Dow University of Health and Sciences. I have so many things, and to be very honest, that Dr. Altaf and Ma'am said that like हम सबका बड़ा ही बुरा हाल है हमारे hospitals में, like we have to arrange, and we are requesting from the behalf of all students that it is request to the Dr. Shamil, please kindly arrange all the platforms, like sir ने बात करी epidemiology के and infection control की, ताकि हम और अपनी टीम में enhancement ला सकें, इसमें हम अपने आप को provoke कर सकें. To be very honest, it's very difficult and it's very change. Whatever we are studying, to be very honest, we are not following our terms and conditions in our daily life. Now हम जिम्मेदारी लेते हैं. Now हम जिम्मेदार हैं that we have whatever we have to learn, whatever we have learned in our life, especially in this 1 year of infection control diploma, we have to put in our daily routine. And जब इंसान पढ़ लिख जाता है, जब इंसान किसी special course में part ले सकता है, तो फिर उसकी ज़्यादा responsibilities बढ़ जाती हैं. And ma'am, thank you so much. आपका भी मैं करना चाहूँगी. Conclusion में बस मैं यही कहना चाहूँगी, we all have to continue with existing environmental infection control measurement, which may can decrease, ma'am, the risk of healthcare like associated infection among patient, especially immunodepressant people, the healthcare workers, especially we are having a lot of responsibility. So as being a student, it's my request to all of you, kindly, please, whatever you have learned, it's time to just put the efforts in your daily routine.
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने 50% पढ़ा है, अगर आपने उसमें से 10% या 5% भी इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपके साथ जो सराउंडिंग्स में पीपल होंगे वो भी आपको देख देख के बाकायदा उस चीज को फॉलो करेंगे, उस चीज को काम करेंगे। चलिए, अगर आपने पूरे इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छे से पढ़ा है या फिर उसमें आपने बहुत सारी चीजें लर्न की, अगर आपने सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी पिकअप कर लिया, विच इज द मोस्ट लाइक हैंड वॉशिंग, तो आप बहुत सारी चीजों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, साथ में आप दूसरी चीजों को भी बचा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम to show your efforts. Now it's time to show your interest. Now it's time to show to the world, to the hospital, that you are something. And I'm very grateful, especially Sir Farhan. And it's my request to Ma'am Arfa Khantoon that kindly arrange all these type of the programs ahead, which we can do everything by our own self, by to be the leaders. Now, sir, मुझे सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी that we are the leaders, and for sure we are the leaders if we have this opportunity, so we have to avail this opportunity. If we have this problem, so we are if the infection is problem, so we healthcare workers are the solution for that problem. And we have this, Allah Pak has given this chance to all people that we can minimize and we can ensure that things in our lives, and we can do everything whatever we want, even as an infection control nurse, as a normal nurse, even as a doctor. It's we all are accountable, and we all are responsible for doing all these type of the things which we can do. Sir Farhan, thank you so much. And once again, kindly, we have to arrange all these programs ahead for more manufacturing. We are responsible now to manufacture manifestations of the nurses of infection control diploma. Thank you. All right, so thank you, Ms. Rabia Nas, for such an amazing words and a long speech. Thank you once again. Now I would like to call I have more words to for speak. Right now, I'm on duty, so I cannot be. I have more words to accomplish and to give my more feedbacks on the behalf of all participants. It is just my little work to add, and it is my request, please ma'am, arrange all, like we have to do graduate, we have to do master, you have to plan the master program in this, that we can get a good huge degree, that which is at the international level as well. Okay, so now I guess Ms. Rabia, you are enough, right? All right. Yeah. So now I would like to call Mr. Muhammad Awais, please. Ji, assalamu alaikum guys. Good morning to all of you. Thank you so much, Ms. Rima. And thank you so much to all faculty and all infection control team जिन्होंने आज हमें ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया, और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड पढ़ाया पूरे साल, और अब हम ग्रेजुएट हो कंट्रोल बेसिकली एक वास्ट फील्ड, और जो हमने एक साल में पढ़ा वो जस्ट समझें कि आटे में नमक के बराबर था, जैसे चने का। सो गुड, each and everything, हॉस्पिटल में हर चीज के बारे में, और हॉस्पिटल के बारे लॉन्ड्री है, कोई ऐसी चीज का काम हो रहा है तो उसके रिलेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल का क्या प्रोग्राम होगा, या फिर उसके रिलेटेड उनका क्या रोल है उसके अंदर, वो सब चीजें। सो इन्फेक्शन कंट्रोल बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि हम में और एक आम जो हेल्थ केयर वर्कर है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, ताकि हम इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसीज को फॉलो करवा सकें, खास करके हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जैसा कि सर बात की इससे पहले, क्योंकि यहाँ पे वही जो CRE, MDROs और एसिनोबैक्टर और ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से ट्रांसफर हो रहे हैं। सो मेन वही बात है कि इन सब की बेसलाइन, सबका एक कंक्लूजन पॉइंट यही है कि हमारा जो हैंड हाइजीन है वो इन सब चीज़ों का ब्रेक पॉइंट बनता है। सो थैंक यू सो मच
मेरी तरफ से बस यही था, and thanks to infection control team. All right. Thank you very much for such an amazing words. I really appreciate it. Now moving further for diploma distribution announcement, and I would like to call once again Ma'am Arfa Khatun for certificate distribution. Ma'am Arfa Khatun, please. So मेरा ख्याल है वो टाइम आ गया कि हम आपको वो आपकी साथ शेयर करें आपके डिप्लोमास और आपको दिखाएं। एक सेकेंड में थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज। नहीं है राइट। तो से सबने अब तक आपको कॉन्ग्रेट्स किया, मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी एफर्ट्स का टाइम आपकी जो भी एफर्ट्स थी उसकी मिठाई खाने का टाइम आ गया है। राइट। तो आप लोगों को डिप्लोमा अनाउंसमेंट में करती जाऊंगी। आप लोगों का कि डिप्लोमास जो हैं वो विद इन वीक आप लोगों को आपके घर के एड्रेस में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जहां जहां का एड्रेस आप लोगों ने लिखा है तो आप लोगों को हार्ड कॉपी पोस्ट हो जाएगी इंडस हॉस्पिटल की तरफ से इंशाल्लाह विद इन अ वीक। जो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं एमसीएम बजट के, उनके सर्टिफिकेट्स मिस्टर बशीर के पास होंगे और वो लोग एमसीएम के जो स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं वो राब्ता कर लें मिस्टर बशीर के साथ, लेकिन यहाँ पे उनके साथ अनाउंसमेंट्स होगी। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स थे उनका स्टार्ट से ही नाम है, तो ये टॉपर स्टूडेंट्स हैं और टॉप 10 में आ रहे हैं मिस फरियाल असद, कॉन्ग्रेट्स फरियाल। मिस आरफा महक, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिस निदा मुमताज, मिस रुबीना गजनफर, मिस्टर मोहम्मद अवेस, मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद हमजा, मिस नौरीन फातिमा, डॉक्टर हुमा तबस्सुम, मिस फातिमा कमर, मिस समीना शब्बीर, मिस्टर अब्दुल्ला नजर। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे। इसके बाद मिस्टर आफ्ताब मुस्तफा, मिस्टर एहसान अली खान, मिस सबीन फातिमा, मिस्टर सुलेमान शफकत, मिस्टर आकाश बरकत, मिस्टर अब्दुल रऊफ, मिस्टर एहसन इलाही, मिस आयशा बीबी, मिस आयशा जरी, मिस्टर अमार रजा, मिस अमरीन कैलविन, मिस अनम मुनव्वर, मिस अनम इकबाल, मिस अनीला इम्तियाज, मिस अनुषा असलम, मिस्टर आकिब हुसैन, मिस अक्सा नवाज, मिस अर्शमान यूनस, मिस्टर असद मुनसिफ अली, मिस आसिमा बतूल, मिस अस्मा रिजवी, मिस्टर असमत अली,
Miss Esther Salim, Mr. Ataur Mustafa, Mr. Awais Ahmed, Miss Bushra Irshad, Dr. Akash Prem, Dr. Muhammad Musa, Dr. Mohsin, Dr. Neelam Zahra, Dr. Nida Yaqub, Dr. Ashoni Kumar, Dr. Muhammad Mehtab Shabir, Dr. Numita Hafiz, Dr. Sana, Dr. Sara Shahid, Dr. Shahrukh, Miss Lishwa Nasir, Miss Iram Indriaz, Miss Faiza Waris, Miss Farhat Shaheen, Mr. Farooq Ahmed, Miss Farzana Munir, Miss Hasib Ashraf, Miss Hasina Gul, San Murtaza, Miss Hina Jabbar, Miss Humaira Bibi, Mr. Ijazul Haq, Mr. Ikramullah, Miss Imama Zainab, Miss Ikra Tabassum, Miss Iram Sabir, Mr. Irfanullah Haroon, Mr. Jamil Ahmed, Mr. Jamiur Rahman, Miss Jennifer, Mr. Kareem Qurban Ali, Dr. Kavish Ali, Miss Khalida Zia, Miss Komal Javed, Mr. Kuldeep Kumar, Miss Louis Jessie, Miss Mehtab Murad, Miss Malika, Miss Mahmoona Tahira, Miss Maria Ali, Mr. Mehrban, Miss Mahavish Shan, Miss Mahavish Javed, Miss Michelle, Miss Mishma Suman, Mr. Muhammad Bilal, Mr. Muhammad Hassan, Mr. Muhammad Hussain Nabi, Mr. Muhammad Ibrahim, Mr. Muhammad Imran, Mr. Muhammad Shariar, Mr. Muhammad Wahid, Mr. Muhammad Bakar, Mr. Muhammad Yahya, Miss Musarrat Parveen, Miss Nadia Ghulam, Mr. Naimullah, Miss Naila Irshad, Miss Navila Ruhi, Miss Nazia Fakir Ali, Mr. Nayamatullah, Miss Noreen Calvin, Miss Noreen Fatima, Miss Parveen Louis, Miss Rabia Bibi, Miss Rabia Kareem, Miss Rabia Aruj, Mr. Romeo Peter, Miss Rubina Aisha, Miss Rukhsana Bibi, Miss Sadia Kausar, Miss Sadia Riaz, Mr. Sagir Ilyas Kahro, Miss Saima Kareem, Miss Salma Muhammad, Miss Samina Ruhi, Miss Samreen Nadeem, Miss Sana Shafiq, Miss Sana Umar, Mr. Sanjay Kumar, Miss Sahar Ashik, Miss Shahida Samreen, Miss Shakila Nawabzada, Mr. Shahryar Shahid, Miss Cheryl Yaqub, Mr. Shoaib Akhtar, Mr. Shoaib William, Miss Sidra Rafiq, Miss Sobia, Miss Sadia Rabia Niaz, Mr. Tahir Ahmed, Miss Tahira Nawaz, Mr. Talat Mahmood, Miss Taskeen Kausar, Miss Tanzila Kausar, Miss Ulfat Jabi, Miss Aruj Naim, Miss Ursula Yaqub, Mr. Uzair, Miss Uzma Nazir, Miss Yasmin Kausar, Miss Zahra Riaz, Mr. Zameen Hussain, Mr. Zarnab Parvez, Miss Zataisha Yusuf, Mr. Ziaur Rahman, Miss Zunaira Anwar, Miss Zunaira Yasmin, Miss Zohra,
And congratulations to all successfully passed this exam students. Thank you very much for attending this ceremony. Thank you. Thank you so much, Ma'am Arfa, and I would like to congratulate you all and best of luck for your future endeavors. Thank you very much, Ma'am Arfa, and I would like to congratulate you all for achieving this certificate and best of luck for your future endeavors. And now I'd like to call Ma'am Shabnam Bilal. She is a Deputy Manager in Infection Control Department of Indus Hospital and Health Network. She is a soft-hearted person I have ever known. I would like to call Ma'am Shabnam Bilal. Please say some words and give a keynote. Assalamu alaikum, everyone. I would like to thank all the wonderful speakers and faculty and all IC members, all of you taking your precious time from your busy schedule. Finally, our thanks go to our Dean, Dr. Zafar Zaidi, Dr. Shamil Ashraf, Dr. Altaf Ahmed, and Madam Arfa, who did so much also in the organization. Without their effort and their contribution, we would not have had such activities. And also thank you all the students, and I hope that you all learn a lot from 1-year diploma course and will do more effort for implementation IC practices for improvement of patient quality of care. And thank you very much for your pay attention. What's your name again? Sharabiya. You changed my name. All right, so now it's about to end for this session, and I'm very thankful to you all, especially our guests and speakers who did well and share their experiences as well. Thank you once again. Now our session is about to end. And best of luck you all. Best wishes for you all and good luck. Thank you. Allah Hafiz. Congratulations. Thank you. Thank you so much.